to my channel. Today I'm going to tell you that how can you download OBS Studio and then how can you use it. Basically, I think so. I had made a video that about pre-screen recording software, and somebody commented that kindly tell that how can you download and use OBS Studio. So today I'm making this video. Kindly watch it till end, and do subscribe to my channel, to press the bell icon for watching my latest videos at first and for getting their latest notifications. So now let's get started. So firstly, you are going to open your browser, any browser that you use. Okay, so let's suppose I use Firefox, so I have opened it. Now I'm going to search here OBS Studio. Okay, then as you will search that, you are just going to get a link. Okay, आप लोग उस लिंक तक पहुंचेंगे. Like here is this first link. Okay, and we are going to like click on it. ठीक है, हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन जो विंडो आएगी उसके थ्रू हम लोग OBS स्टूडियो को डाउनलोड कर सकेंगे. सो अब ये विंडो आ चुकी है. As you can see this window, you can also get a lot of guidelines through these photos like this, but I'm just going to tell you guys making this video that you can easily understand. You know that easy and difficult, so you can like easily know everything about it. Okay, so now you guys are just going to download it for Windows, Mac OS or Linux, whatever you use. If you use Windows, so it supports Windows 8, Windows 8.1 and 10. So I'm using Windows 10, so I'm going to just download it, or I'm just going to click here on this link and then it will start downloading. But I have downloaded it already, so I'm just not going to download it again. I'm going to open that software I have downloaded. Okay, so I'm just directly going to open it. ओके, तो अब ये मेरा जो डाउनलोड हुआ था, मैंने इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया. आई थिंक सो कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में. वहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने डाउनलोड करनी है. तो उनको डाउनलोड करने के लिए वो 14.2 MB की हैं. जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो इंस्टॉल करते हुए आपको उस पर ले जाएगा एंड आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके उनको डाउनलोड कर लेना. वो 14.2 MB की हैं, जल्दी से ईज़िली डाउनलोड हो जाएगी. तो जब आप इंस्टॉल एंड डाउनलोड दोनों चीज़ें कर लेंगे, उसका वेरी फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, यहाँ पे आप लोग सीन्स में आके एक सीन ऐड करेंगे. ठीक है, उसका आप नाम यहाँ पे रख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बिकॉज हम लोग रिकॉर्डर यूज़ कर रहे हैं. रिकॉर्डिंग के नाम से रखेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा. एंड उसके बाद सोर्सेज. यू नो व्हाट सोर्सेज मीन्स? सोर्सेज मतलब कि चीज़ें टाइप जो इसके अंदर होनी चाहिए. सोर्सेज हम लोग राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके नंबर 1 मेरा बेसिक जो टॉपिक है ना ये वीडियो बनाने का, या मेरा क्या मकसद है वीडियो बनाने का, वो यही है कि आपको बताऊँ कि आप ऑडियो किस तरह साथ साथ कैप्चर कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते. तो इसका ओके पे क्लिक कर सकते हैं आप लोग. अगर डिफ़ॉल्ट चाहें आप लोग तो यहाँ से कोई भी माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लें. अब आप लोग, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगी बिकॉज मेरे लिए अच्छा होगा. ठीक है, अगर आप चाहें डिफ़ॉल्ट रखें या फिर अगर आप चाहें तो कोई और चेंज भी कर सकते हैं आप लोग. यहाँ पे कुछ इसकी एडवांस्ड ऑडियो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा. मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग मॉनिटर जो है ना उसको ऑफ ही रखिएगा. ठीक है, बट फर्दर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ठीक है, यहाँ से आप लोग कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में आके. मैंने यहाँ पे माइक्रोफोन कर लिया, आप लाइनिंग कर लें, इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन कर लें. मैंने इंटीग्रेटेड कर लिया. आई थिंक सो ये ज़्यादा बेटर रहेगा. एंड अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं बोलती हूँ इसका ये वॉइस बार इंक्रीज़ हो रहा है. राइट, सो ये तो हो गया. अब आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि यहाँ पे जो ब्लैक विंडो में होगा ना,
आप जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें भी वही आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये ब्लैक है, जाहिर सी बात है ब्लैक ही रिकॉर्ड होगा, हम लोग जो मर्जी कर ले। तो डिस्प्ले कैप्चर एक हम लोग ऐड करेंगे। ओके, ये अब है जी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पेज या विंडो। It's most confusing window because you can say that here are a lot of these screens, right? But I'm using a single screen, right? So why are there a lot of screens? As I have told you that whatever will be happening here in this window will be recorded in your video. So, dearest subscribers, viewers, or people, firstly like my video, subscribe my channel if you have not done. So this is just for confusing you guys. Okay, if you will, let's record the video. So here, this is one window, am I right? Yes. So just this will be recorded. It's just for confusing, like you can say in the papers also, right? So it's just for that. If you want to start recording, stop recording, start streaming, if we can also stream through this recorder, okay? And then we can also start virtual camera. We can go to its settings, exit, anything. Let you guys come here towards the controls at right corner. Here is the option of start streaming and recording. If you will click on recording, so you will your recording will be started and this button will be changed into stop recording. Then when you will again click to here, so that video will be ready for you to watch. Okay, so I hope so that by this video will be helpful and you guys will like this video, right? So I want you guys to subscribe my channel, because I'm working hard and doing a lot of efforts to give a lot of knowledge to you guys. So you guys have to subscribe my channel. Just click a red button under this video and it's a subscribe button. Kindly click on it and press the bell icon, and also like this video. Don't forget to share it. Thank you very much. And if you want to get more interesting and knowledgeful videos, so you can subscribe to my channel. Plus, you can like this video, share this video, and if you want any other topics, you can also comment on this video. Thank you very much. Allah Hafiz.